Hello guys, welcome back to my new video. In this video we will study about rule 18 that is responsibilities between vessels. So इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर इसके पहले का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो so प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार. सब्सक्राइब कर दिया ना? कर दिया ना? Thank you so much. So the rule 18 is responsibilities between vessels. Responsibilities means जिम्मेदारी लेना. So obviously जो powerful vessel होगा उसके पास ज़्यादा responsibilities होगी because he can take any action efficiently. Now coming to first line, that is except where rules 9, 10 and 13 otherwise require, which means अगर rule 9, 10 और 13 आता है so we will not apply this rule, that is responsibilities between vessels, because in rule 9 that is narrow channel we will apply the rule according to narrow channel, and rule 10 that is TSS we will apply the rule according to TSS, and in 13 that is overtaking, जो vessel overtake करेगा उसे ही action लेना होगा. It doesn't matter कि कोई सा भी vessel हो. As we are talking about responsibilities, so the first priority goes to not under command. Those vessels which is not under command that can't take action due to some exceptional circumstances, restricted in ability to maneuver. Second point पे है because he can't take action because of her work, and the third one will be the fishing, and the fourth one will be the sailing, and the last one will be the power driven vessel. As the power driven vessel is powerful vessel, so she will keep out of the way of other vessel according to point A. Coming back to point B, a sailing vessel under way shall keep out of the way of means जो सेलिंग वेसल है वो किसके रास्ते से दूर रहेगा. पहला NUC नॉट अंडर कमांड, RAM restricted in ability to maneuver, and the fishing vessel. Now coming back to point C, a fishing vessel engaged in fishing when under way shall so far as possible keep out of the way of means अगर कोई वेसल है जो कि फिशिंग में engaged है वो किसके रास्ते से दूर रहेगा. वेसल नॉट अंडर कमांड, and the second one will be the restricted in ability to maneuver. Again we are coming back to the priority table. So सबसे ज़्यादा priority किसकी है? पावर ड्रिवन वेसल्स की. वो उन सभी वेसल्स को अवॉइड करेगा जो कि इसके ऊपर लिखे हुए हैं, दैट इज NUC, RAM, फिशिंग वेसल एंड सेलिंग. सेलिंग वेसल किसे अवॉइड करेगा? फिशिंग, RAM, NUC. फिशिंग वेसल, NUC और RAM. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी टेबल द रूल 18 फॉलोज. सो इस सिनेरियो को अच्छे से समझने के लिए लेट्स सी द पिक्चर्स. सो हियर वी आर कंसीडरिंग सम डिफरेंट पिक्चर्स, दैट इज पावर ड्रिवन वेसल्स, sailing vessel, fishing vessel, and for CBD we are taking a container ship, and for restricted in ability to maneuver a red tanker, and for not under command that is a green bulk carrier. So इस इमेज को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा वेसल एक्शन लेगा. Let us take the first situation of sailing vessel and power driven vessel. As you can see in this picture that both vessels are going to cross each other. Obviously they will hit because there is no any change in their bearing. So according to this rule, who will take action? The power driven vessel will take action. So she will alter her course to her port side and pass clear. जो power driven vessel है उसने पोर्ट की तरफ अल्टर किया. ये कोई जरूरी नहीं कि वो पोर्ट की तरफ अल्टर करे, वो स्टारबोर्ड की तरफ भी अल्टर कर सकता था बिकॉज इस रूल में कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं लिखा हुआ है. बट उसने स्टारबोर्ड की तरफ अल्टर नहीं किया क्योंकि वो एक एफिशिएंट एक्शन नहीं होता, सो उसने पोर्ट की तरफ अल्टर किया. नाउ कमिंग टू सेकंड सिचुएशन ऑफ सेलिंग वेसल एंड द वेसल व्हिच आर रिस्ट्रिक्टेड इन एबिलिटी टू मैन्यूवर. सो बोथ वेसल आर गोइंग टू हिट ईच अदर क्योंकि उन दोनों के बेयरिंग में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है. सो इस रूल के अकॉर्डिंग हु विल टेक एक्शन? ऑब्वियसली द सेलिंग वेसल विल टेक एक्शन बिकॉज प्रायोरिटी गोज टू सेलिंग वेसल. सो इस रूल के अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं लिखा है कि कौन सा एक्शन लेना है, सिर्फ इतना ही लिखा है दैट सी विल कीप आउट ऑफ द वे ऑफ RAM वेसल. सो सी विल टेक एक्शन व्हिच विल बी एफिशिएंट. नाउ कमिंग टू थर्ड सिचुएशन ऑफ पावर ड्रिवन वेसल एंड नॉट अंडर कमांड वेसल. इन रियलिटी जो नॉट अंडर कमांड वेसल होता है वो मूव नहीं करता है, बट इस सिचुएशन में वो मूव कर रहा है. सो ऑब्वियसली वी कैन सी दैट इट इज ओवरटेकिंग सिचुएशन मींस रूल 13. सो ऑब्वियसली इट इज रूल 13, सो वी विल नॉट इंक्लूड रूल 18. रूल 18 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पावर ड्रिवन वेसल को एक्शन लेना चाहिए, बट इट इज overtaking situation, so not under command vessel will take action. यहाँ पर rule 18 apply नहीं होगा. So in this case the not under command vessel will alter her course to her starboard side and pass well clear. Now coming to point D, first any vessel other than a vessel not under command or a vessel restricted in her ability to maneuver shall, if the circumstances of the case admit, avoid impeding the safe passage of a vessel constrained by her draught. So in this case the fishing vessel, sailing vessel and power driven vessel avoid the impeding of safe passage of the vessel. इस
चीज को हम लोगों ने रूल 8 में पढ़ा था. So again let's see the pictures. So in this picture we can see that the power driven vessel and the constrained by draft, which is a container ship, both are going to cross each other. So इस रूल के अकॉर्डिंग the power driven vessel will take action. So power driven vessel क्या करेगा, वो अपने स्टारबोर्ड की तरफ अल्टर करेगा और वो मूव करता रहेगा. तब तक मूव करेगा जब तक कि constrained by draft vessel क्लियरली पास ना हो जाए. और जैसे ही constrained by draft vessel पास होता है तो पावर ड्रिवन वेसल अपने ओन डायरेक्शन में मूव करेगा. बट अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि पावर ड्रिवन वेसल एक्शन नहीं लेता है तो उस टाइम पे कंस्ट्रेंट बाय ड्राफ्ट वेसल क्या करेगा. ऑब्वियसली वो अपने पाथ से डेविएट तो हो नहीं सकता है. सो वो क्या करेगा कि अपने स्पीड को स्लो कर लेगा और स्लोली मूव करेगा जब तक कि पावर ड्रिवन वेसल उसके पाथ से क्लियरली पास ना हो जाए. नाउ कमिंग टू पॉइंट सेकंड, अ वेसल कंस्ट्रेन्ड बाय अ ड्राफ्ट शैल नेविगेट विद पर्टिकुलर कॉशन हैविंग फुल रिगार्ड टू अ स्पेशल कंडीशन. सो यहाँ स्पेशल कंडीशन क्या है कि वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा. सो शी शुड नेविगेट with particular caution. So the CBT vessel will take action just by increasing or decreasing her speed. Now coming to point E, a seaplane on the water shall in general keep well clear of all vessel, avoid impeding their navigation in circumstances however where risk of collision exists, she shall comply with the rule of this part. So obviously we are talking about seaplane. So seaplane is the power driven vessel, so she will take action according to this rule, which means she will keep out of the way of other vessels. Now coming to point F, first, a weak craft shall when taking off, landing and in flight near the surface keep well clear of other vessel and avoid impeding their navigation. So जो weak craft होता है उसका जो स्पीड होता है बहुत ज़्यादा होता है. So उसे जो और भी वेसल्स होते हैं जो पास करते हैं, जो मूव करते हैं, तो उनके नेविगेशन को वो इम्पीड नहीं करेगा. अगर वो टेक ऑफ कर रहा है, वाटर सरफेस पे लैंड कर रहा है या पानी के सरफेस पे फ्लाइट कर रहा है, उस कंडीशन में और किसी के वेसल्स के पैसेज को इम्पीड नहीं करेगा. A weak craft operating on the water surface shall comply with the rule of this part as a power driven vessel. So जो weak craft होता है वो मशीनरी होता है, so उसे हम power driven vessel कंसिडर करेंगे. So the power driven vessel will keep out of the way of other vessels. Let us take another situation. और इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ एक रैम वेसल है और एक पावर ड्रिवन वेसल है, बट बोथ वेसल आर पावर ड्रिवन वेसल. सो हु विल टेक एक्शन. सो इस रूल के अकॉर्डिंग हम दोनों वेसल्स के स्टेटस देखेंगे. एक पावर ड्रिवन वेसल है जो कि मूव कर सकता है, अपने कोर्स से डेविएट कर सकता है, और दूसरा जो पावर ड्रिवन वेसल है वो रिस्ट्रिक्टेड इन एबिलिटी टू मैन्यूवर है, मींस वो अपने पाथ से डेविएट नहीं हो सकता है. सो इन दिस केस ऑब्वियसली द पावर ड्रिवन वेसल विल टेक एक्शन. सो शी विल अल्टर हर कोर्स टू हर स्टारबोर्ड साइड and move away. So now this brings to the end of rule 18. I hope you guys liked it. If you have any doubt, just comment it below. Please do share and subscribe. Thank you.